Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So what are we saying is that we have, for example, normal variable a, which is 5, which is what? And now this is a pointer which is declared using the asterisk ptr. It's a declaration. When I say asterisk ptr, it means declare it as a pointer. A pointer means which will hold what? Yes, you have to tell me. It is the address. It holds the address, right? Now, if I say, if I print a like this, it will print me what? The 5. Okay. If I print the address of a, if I print what? It will print whatever is the address of a. Say in the memory, this is a somewhere which has the 5 in it. Say it has some address 62356, for example. So what will the a print? Ampersand of a print? The address of. So what is in the PTR again? What is in the PTR? The address of a. Because PTR is meant to take the address. It can't take the value. Okay. If you put something into say you put it into 244. So we are actually talking about some location 244 in the memory, the address 244, not the value like this. Okay. So that 244 itself will have some value inside. Okay. So that means whenever we talk about PTR, it's talking about that some address. Okay, na? Now if I say PT, if I print PTR, what will the PTR print? It will again print the address. It will print what? This thing, because PTR is inside is having this. Now if I, but the important thing is PTR is pointing to the same location what the A is pointing to, because in PTR there is the address of A. Address of A is the address of this 5. Now PTR means pointing to the same location. For example, Rasiba is living at the room number 5, and I'm creating PTR which is having the 5 in it. So that means PTR is also pointing to this room. So I can access the Rasiba who is sitting inside the room using the A or using the P. Now if I use the PTR, then I have to say value at address. Now asterisk means value at address. So address is held by PTR. What is that? Is 622 whatever that is, and asterisk means what is the value at that. Now that means it goes inside that address and fetch the value. That is 5. So this will also print me 5. Does it make sense? Now here, what is here? What are we doing here? If I say ampersand of a, what is ampersand of a? It is address of a. That means if the a was here, which was having 5 in it, and a was having 62535 address, for example. Now ampersand of a is this 62535. What is the asterisk doing? That is, so that means this whole thing, this thing will evaluate to 5, and ampersand of 5 means address of 5. That's again this thing 62535. So this whole thing will give out you what 6. This will give you this 62. What will asterisk do? So I'm going inside and then coming back, inside coming back, and so on. So it is 5. Getting? So this overall will print me what? The 5. It will print the value, because last it will go value at this address, right? Okay. Now we are talking about the array. Now we're talking about what? Now in this AR array, okay, then it has a size of 5. That means it is 5 blocks of blocks. Now I'm initializing data here only. So that is I'm putting a 1, 2, 3, 4, and 5. So it has 5 block of memory. So it is 0, this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. This is called index. This is called what? We can use the index 0 to go to this location, using 1 go to location. So if the array size is 5, index will run from 0 to 4. 0 क्योंकि हम 1 to 5 कर रहे थे ना, तो वो 5 आते हैं, तो 0 to 4 भी 5 आते हैं ना. This is 1 2 3 4 5. Okay, so we use 0. That means 1 lesser. अगर 0 शुरू करेंगे तो एक कम पड़ जाएगा. We're not starting from 1, we're starting from 0. Second thing is the name of the array AR. It is a static pointer. It is a static pointer means we cannot increment or decrement this AR, because AR is a pointer
That means it holds the address. It holds the address of the first block. ये जो first block है, इसका address for example है 6242. Now AR will have 6242 in it. AR will have what? Okay. If you understand this thing, then tell me one thing. Now, first thing is that I can also omit the size here because I'm initializing it here. So when you initialize the values at the time of declaration, then you don't need to do size because compiler will see the size. Okay, or if you say size and 10 and then you give lesser values, then other blocks are empty. ठीक है, 5 ही मैंने दे दी ना वैल्यू 5 क्योंकि साइज 10 है. अगर आप चाहते हो बिल्कुल वही हो तो फिर आपको कोई साइज देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही करेगा. हाँ नहीं, ये इन्फिनिटी साइज नहीं है. वी आर गिविंग द साइज टू द कंपाइलर. अभी 5 है तो 5 ही साइज मिलेगा, जितना आपने एलिमेंट्स दिए उतने साइज है. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे साइज दे दिया तो उतने ब्लॉक श्योरली आपको मिलेंगे. The rest of the blocks will be empty. ठीक है. Now what I am saying is that this AR is what? It's a static pointer. It holds the address of the first block. So AR के पास इस A1 का एड्रेस है. ठीक है ना. तो अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल करेंगे PTR++, that means I am incrementing PTR and I am trying to do AR++ also, that I want to increment what? AR. Now this is straight away show the error. Why? It's a static pointer, you can't do. PTR में error नहीं है. PTR को increment कर सकते, AR को नहीं कर सकते क्योंकि array का एड्रेस ही घूम जाएगा फिर. नो array का नाम पॉइंटर. PTR कोई स्टैटिक नहीं है, इसको आप इंक्रीमेंट कर सकते हो. array का नाम जो है वो स्टैटिक पॉइंटर है. अब ये देखना कि हम कहते हैं कि ये पॉइंटर है, तो फिर जो अभी तक हमने यहाँ पे पॉइंटर सीखा उस हिसाब से हम एक्सेस करेंगे. ठीक है, फिलहाल मैं इसको बंद रखूंगा. ठीक है, I don't want this thing. मैं इसको कमेंट आउट करूंगा. ठीक है ना. अब यहाँ पे मैं प्रिंटफ कर रहा हूं \n %d \n. यहाँ पे मैं AR प्रिंट कर रहा हूँ. क्या प्रिंट कर रहा हूँ? So what do you think? What should be printed? No, %d नहीं दिया मैंने. %d तो दिया मैं, कामा बोल गया. अरे माउस को नहीं दिख रहा है मुझे. ये है. What is AR having? So what will be printed? Address of first block will be printed. This is 6. जो आपका ये एड्रेस आ रहा है यहाँ पे 6356720. It is the address of home. So who is inside? Because we are saying AR is a pointer. The name of the array is a pointer. It's a static pointer which holds the address of the first block. So this जो अभी आंसर आया, it is the address of 1. It's address of what? Now I want 1. Now I want what? So that means value at address. जिस तरह यहाँ पे करते हैं PTR में, भाई PTR में क्या है? PTR में एड्रेस है A का. I want that 5 asterisk PTR. अभी तक तो पढ़ा हमने, वो रिकॉर्ड नहीं किया था हमने. ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कहूंगा asterisk AR, so it is means value at the address. मेरा ख्याल है वो दूसरे में यहाँ करेंगे ताकि आपको ये रहे. Control C. Now I say here asterisk AR. I say here what? What should you give? It should give me 1. You see? माउस को समझ नहीं आ रहा मुझे कहाँ जा रहा है. हाँ, this one here. Look here. This is done by home. एक मिनट. Now look here. ये पहला वाला है जिसमें हम AR प्रिंट करते हैं. This is the first block address
And what is the value at that first block? That's the asterisk here. Okay. Now I can do the same thing using control V, and I say AR of index 0. AR in the box index 0. It will again give me the same result, 5. Exactly. So in pointer terminology, this AR of 0 and asterisk AR is same. So what is AR of 0 doing? It is seeing what is at the first location. What is at the, लेकिन इससे मुझे आसानी ये होगी कि मुझे दूसरी लोकेशन भी निकल सकती है. मुझे क्या निकल सकती है? बिकॉज जो मेरा एरे है, देखिए ये मेरी एरे है और ये फर्स्ट लोकेशन में 1 है, सेकंड लोकेशन पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4. अगर 1 to 5 है तो 0 to 4 चलेगा. अगर आप so if this AR is pointing to the first location, so what is AR having address? This is the address what AR has, that is 6356720. This is actually the address of this first location, 6356720. Because this is integer takes 4 bytes, so this will take, this whole thing will take 4 bytes. So this second address will be at 63724. Understand? This is the second location. Third, the next location will be at 8, and so on. Okay. Now using the index becomes very easy to access the whole array, because I could say AR of 0 to this, then I say AR of 1. Internally what it says is, it says the base address is in AR, that is the first block address, and it will plus, it will do like 6356720 was the first block, then it will add to it 1 into 4. This 4 comes the size of what is the data type of AR. If AR has the char, it will be size is 1. If it is int, it is size is 4. Basically it depends upon the no, int का size depends upon the processor word length. अगर आपका 32 बिट प्रोसेसर है तो फिर 4 लेता है, int उतनी ही बाइट लेगा. अगर आपके पास 16 बिट है तो 2 ही लेगा, it will be 2 bytes only. Okay. So अगर आपके पास 32 बिट है तो फिर आपका 4 होगा, जितना भी आपके पास है. तो this C3 is actually 32 बिट. यूनिवर्सल का नहीं है, इसका यूनिवर्सल कुछ नहीं है, इसका डिपेंड करता है ऑन द प्रोसेसर. int takes, no, that's wrong question, because int takes the size of the processor जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो. word size, it's got a word size processor. For example आप पुराना कर रहे हो 16 बिट प्रोसेसर, तो आपको उतनी ही मेमोरी मिलेगी, 2 bytes, because 2 bytes थर्ड के ना शोरा. ओके. अगर आपके पास 32 बिट है तो 4 bytes आपको मिलेंगी. ठीक है ना. तो अगर आप इसी प्रोसेसर के ऊपर लगाओगे आप टर्बो सी 16 बिट है, वो लगता था 16 बिट वाले प्रोसेसर्स पे, अभी भी आप वही करो ना इस्तेमाल कभी कभी. उसमें अगर आप कहोगे साइज ऑफ इंट, इट विल गिव यू 2. ये C3 जो है ये है 32 बिट. अगर इसमें कहोगे साइज ऑफ इंट, इट विल गिव यू 4. इसी पे लगाएंगे, इसी प्रोसेसर पे. अगर मैं अब इसका 64 बिट वाला लगाऊंगा, इट विल गिव साइज 8, because int takes the size of the machine. What is the register size actually? अंदर जो प्रोसेसर होता है उसकी रजिस्टर साइज कितनी है, क्या वो 16 बिट है, क्या वो 32 बिट है, क्या 64 बिट है, उसी हिसाब से आपका साइज मिलेगा. ठीक है. So it varies as per the processor. Okay, now internally what it does is AR of 0 does what? It says what is the index? Index is 0 into whatever the size is, whatever the जो भी size है int का, वो इसको multiply करेगा. 4 into 0 is 0. So first time it will be same 6356720 plus 0, that is same. इसका address आएगा. Next time it will do index is 1 into 4. So what is 1 into 4? 4. So if 4 इसको add करेगा, so it will be the address of second location. And अगर मैं कहूँगा यहाँ पर AR of 2, so it will internally do what? The base address what AR has, that is this thing, plus index अगर 2 है, 2 into 4, that is 8. It will add like that.
सो इसीलिए हम एरे को 0 से शुरू करते हैं इंडेक्सिंग, क्योंकि पहली बार जो है वो इसी को करना चाहिए, क्योंकि ये कोड सेव रहना चाहिए, बिकॉज आई एम डूइंग इंडेक्स इंटू 4। पहले टाइम 0 इंटू 4 आ जाएगा, वो 0 ही आएगा, है ना। अगर मैं 1 से शुरू करता तो वो ये वाला एड्रेस देता, ये तो कभी देता ही नहीं। इसी वजह से हम इंडेक्सिंग 0 से शुरू करते हैं एरे में, ताकि जो मेरा ये वाला कोड है सेम रहे, इंडेक्स इंटू 4। अगर इंडेक्स अभी 1 है, 1 इंटू 4 इज 4, सो दैट इज सेकेंड। अगर 2 है, 2 इंटू 4 इज 8, दैट इज दिस वन। ये ऐड होगा किसको? टू द बेस एड्रेस, टू द जो बेस एड्रेस आपके पास है वो एरे के पास है, AR के पास, बिकॉज AR इज होल्डिंग द बेस एड्रेस, दैट इज द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द एरे। उसके पहला एड्रेस पता है ना, उसको मैं ऐड करता जा रहा हूं इंडेक्स इनटू व्हाटएवर द साइज ऑफ इंट इज। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं कर सकता हूं यूजिंग द पॉइंटर एज वेल एज यूजिंग द इंडेक्स एज वेल एज। अगर मुझे दूसरा एलिमेंट एक्सेस करना है, AR ऑफ 1 कहूंगा मैं। अगर मैं एरे से ही करना चाहता हूं, किससे? I want to use the AR only, the pointer method, because if I say like this, if I copy this, Control C and I paste it, now what will this give? हाँ, base address का जो value, that's the first block, so it will give me the first address. This thing will give me what? This will give me the first element. This will give me the what? First element. ठीक है ना? I want but what? Second element. अब AR ऐसा है कि इसको इंक्रीमेंट है ना, लेकिन अगर मैं इसको +1 कहूंगा, ऐसे +1, मैं कहूंगा प्लस, will it work? Why? Yes, it's a static, but what I am doing is, ये रन क्यों नहीं हो रहा? माउस दिख रहा है कहीं पे? इसमें लाइट बहुत कम है। Is this static? भाई ये रन ही नहीं हो रहा, इसको क्या मसला हो गया? ये ऑलरेडी चल रहा है यहाँ से। There shouldn't be any error. Now, if you could see, this is given 2 and 2 in both cases. इसने भी 2 दे दिया, इसने भी 2 दे दिया, इसने 1 दे दिया, इसने भी 1 दे दिया, इसने एड्रेस दे दिया, है ना। अब ये वाला बंदा 2 क्यों दे रहा है? क्योंकि मैं AR को, AR प्लस प्लस क्या होता है? AR प्लस प्लस जो हम करते हैं, AR प्लस प्लस एक्चुअली मींस, इफ आई से AR प्लस प्लस, उसमें फर्क है। अगर मैं कहूंगा AR प्लस 1, इसमें फर्क है। इसमें क्या फर्क है? जो ये AR प्लस प्लस है, इट एक्चुअली मींस AR इज इक्वल टू AR प्लस 1, पहला वाला। ठीक है, दिस AR प्लस प्लस एक्चुअली मींस AR इज इक्वल टू AR प्लस 1, यानी कि AR में जो है, पहले उसको AR को +1 करो। पहले अगर फर्ज में AR में 2 है फॉर एग्जांपल, उसको +1 करो, हो गया 3, और वो 3 असाइन करो AR को, तो AR का खुद का वैल्यू चेंज होगा। AR +1 का मतलब है कि AR जो है, AR में फॉर एग्जांपल 3 है, उसको +1 को कितना बनता है, लेकिन वो AR में नहीं जा रहा है, AR में अपना ही वैल्यू है, AR में जो वैल्यू था वही है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर ये स्टैटिक पॉइंटर है, उसके साथ हम छेड़ ही नहीं रहे। अगर यहाँ पे मैं प्लस प्लस करता है AR प्लस प्लस, वो प्रॉब्लम थी बस, राइट। So I can access using the pointer method also, I can access using the index method also। लेकिन आपको इससे समझ ये बात आ गई कि भाई साहब जो ये AR है असल में पॉइंटर है, क्योंकि मैं एस्ट्रिक से इसको एक्सेस कर सकता हूँ, वैल्यू एट एड्रेस से एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो अब अगर मुझे सारी एरे प्रिंट करनी है, तो एरे का फायदा ये है कि आप उसको आराम से लूप लगा के कर सकते हो। सो आई कैन से फॉर I is equal to 0, I is less than say 5, क्योंकि less than 5 4 होता है, I plus plus, and what I do here, printf space डालेंगे, percentage d AR of, मैं कहूँगा AR of percentage d, close this, percent d equals to percent d, comma, यानी कि AR of I लिखूंगा मैं यहाँ पे, I का वैल्यू पहले 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा,
क्योंकि परसेंट डी जो है वो प्लेस वैल्यूज हैं, वो यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। 1 होगा तो 1 आएगा, 2 आएगा 2, लेकिन फिर यहाँ पे वो वैल्यू आना चाहिए। तो वो कैसे लिखेंगे? AR ऑफ आई, AR ऑफ, है ना? पहली बार AR ऑफ 0 होगा, दूसरी बार AR ऑफ 1, AR ऑफ 2, AR ऑफ 3, AR ऑफ 4 एंड सो ऑन। अगर मैं AR ऑफ आई नहीं लिखता तो मैं वैसे भी कर सकता, पहले मैं इसको रन करूंगा। व्हाट्स हैपनिंग? आई डिक्लेयर ही नहीं किया हमने। अब देखिए इसमें 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, अगर मैं पॉइंटर के हिसाब से करता। आई कुड से हियर एस्ट्रिक, ये यहाँ पे अगर मैं पॉइंटर के हिसाब से करूंगा इस हिसाब से, तो क्या करूंगा मैं इसको? आई कुड से हियर एस्ट्रिक AR प्लस I. What do you say about it? Asterisk AR plus I. One second. अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, AR प्लस I करेंगे। पहली बार AR प्लस 0 होगा, यानी कि वो सेम ही निकलेगा। देन AR प्लस 1, AR प्लस 2 और उसका एस्ट्रिक, उसका यहाँ पे एड्रेस निकलेगा सीधे। AR प्लस 1 किया तो उसका एड्रेस निकलेगा, ठीक है ना? और वो जो यहाँ पे एड जो होगा वो I AR के साथ जो होगा तो वो खुद निकालेगा नेक्स्ट 4 ब्लॉक्स। तो देखते हैं चलेगा नहीं, पहले चलेगा, प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। F5 कहाँ है? Now you see it's working fine. Okay, okay. यहाँ फिर भी सेम ही आ रहा है ना, 1 2 3 4, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसमें हमने खुद पॉइंटर अर्थमेटिक लगाया कि पहले आप क्या करो काम, AR प्लस 1 कर दो, AR प्लस 1, AR प्लस 2, AR प्लस 3। वो क्या करेगा? वो एड्रेस निकालेगा और एस्ट्रिक वैल्यू एट एड्रेस देगा। सो इट आइदर आप दिस वे आप करो, या आप सिंपली इंडेक्स मेथड करो। कौन सा मेथड? इंडेक्स मेथड में मैंने क्या कहा था कि आप सिंपली AR ऑफ I कर दो। अब ना दिस मेथड इज लिटिल इजियर, दिस मेथड इज लिटिल इजियर एंड प्रेजेंटेबल। अब AR एस्ट्रिक में थोड़ा सा उसमें एस्ट्रिक लिखना पड़ेगा, फिर I लिखना पड़ेगा, एंड वो सारी चीजें बेटर है इस तरीके से करना, ठीक है ना? लेकिन दोनों तरीके से कर सकते हैं, इससे पता ही चला कि AR असल में पॉइंटर है, ठीक है। We will move continue this thing by tomorrow. Okay, that's all for today.